वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द ग्रेट रीसेट के पीछे इस बंदे का हाथ है। I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. जिस वक्त मैं कहता था कि ये हमारे दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं, उस वक्त लोग कहते थे कि हमारे दिमाग को कंट्रोल करके इन्होंने क्या कर लेना है। तो देख लो, अब ये खुद मुंह फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि ह्यूमंस आर नाउ हैकेबल एनिमल्स। Humans are now hackable animals. Humans are now hackable animals. और अब जब ये बात साबित हो चुकी है, फिर भी लोगों का कहना है यही तो हम सब चाहते थे। इट्स हार्ट ब्रेकिंग। यसु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं ह्यूमंस आर नाउ हैकेबल एनिमल्स, अगेन आई गो अननोटिस्ड। अजीजो, इस शख्स का नाम योएल नोआ हरारी है। ये एक यहूदी प्रोफेसर है जिसका मानना है कि हुकूमत, वो खुफिया हुकूमत जो दिखाई नहीं देती, वो चाहती है कि इंसानों को सिर्फ बाहर से कंट्रोल ना किया जाए, बल्कि उनके अंदर क्या चल रहा है उस पर नजर रखी जाए, उस पर सर्वेलेंस की जाए। Because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. We want to stop this epidemic. We need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. We now see mass surveillance systems established even in democratic countries, which previously rejected them. And we also see a change in the nature of surveillance. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Governments want to know not just where we go or who we meet. Above all, they want to know what is happening under our skin. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? अब ये सब कुछ कैसे करेंगे, उसके बारे में ये पहले ही टेस्ट कर चुके हैं। ये जो हालिया पैंडेमिक था, इसके अंदर भरपूर टेस्टिंग की जा चुकी है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रॉकेट ना लेना, लेकिन बहुत से लोगों ने रॉकेट लिया और उनके ऊपर टेस्ट हो चुका है। There are pills now that have an electronic sensor that let a healthcare provider know whether you have taken the medication. There are pills now that have an electronic sensor that let a healthcare provider know whether you have taken the medication. इस टेक्नोलॉजी का मैं नाम नहीं ले सकता YouTube के ऊपर खुलकर, क्योंकि आपको पता है कि मुझे फिर से स्ट्राइक आ जाएगी और उसके बाद चैनल को दोबारा से बंद कर दिया जाएगा कुछ हफ्तों के लिए और काम फिर से रोक दिया जाएगा। इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको समझ जाना है छोटे छोटे से। जब मैं कहूंगा ना छोटे छोटे, तो आपको समझ जाना है बहुत ही छोटे छोटे से रोबोट। ऐसे छोटे छोटे रोबोट जो कि दिखाई भी नहीं देते, नमक के दाने से भी बहुत छोटे छोटे रोबोट्स। अब आगे जब भी मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा तो हमारी कोड लैंग्वेज में इसका नाम होगा छोटे छोटे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये लोग हमें सिर्फ पालतू जानवर समझते हैं, इसलिए वो टेक्नोलॉजी जो कुत्ते और बिल्लियों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे RFID टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसे इंसानों को लगाना चाहते हैं। Know about living in the 21st century is that humans are now hackable animals. To hack a human being means to understand that human better. Aaron was able to unlock his smart front door with one microchip and scan another chip with his phone and pull up his personal website. Some of you might start Googling where you can get your microchip implanted, but others of you are probably a bit more cautious about the idea. Even though it's a proven safe technology, it's basically the same technology we use to chip our dogs and cats. It's basically the same technology we use to chip our dogs and cats.
the difference of this fourth industrial revolution is it doesn't change what you are doing. It changes you. If you take genetic editing, just as an example, it's you who are changed. And of course, this has a big impact on your identity. Yeah. And offers certain kinds of possibilities that have to be careful about. You know, when you began to do that kind of gene editing, some people worry that you are changing what it means to be human. That's the problem. And of course, the new industrial revolution offers us many opportunities, but it raises manifold questions on the ethical, but even legal implications. And we have to be prepared for it, and that's what we want to do in Davos next year. Talk about technology and how the ways it can be deployed, that contribute to growth rather than exacerbate unemployment. How will that implement itself? It's a big question mark, because there is a fear that technology, robots, just to take one you gain element, productivity from machines. Exactly, and it replaces maybe the workforce or jobs faster than we can replace them with new jobs. Not everybody can be a robot polisher and so on. So आप सुन सकते हैं कि इस शख्स का कहना है कि हम इंसान को डिवाइन पावर दे रहे हैं और इन्हें वाकई ही हम खुदा बना रहे हैं, ताकि इनके अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी ना रहे, और ना बीमारी होगी तो ना इंसान मरेगा, बहुत लंबे अरसे तक इंसान जिएगा, और ये टेक्नोलॉजी इंसान को खुदाई ताकत देगी. Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. We are really upgrading humans into gods. अजीजों, आपको याद रखना है कि इंसान खुदा नहीं है, और शैतान ने इंसान को यही धोखा देकर खुदा से जुदा किया था कि वो खुदा बन सकता है. आपको बागे अदन का सीन नहीं भूलना है, जहां पर अम्मा हवा से शैतान ने बात की सांप बनकर, और वहां पर उसने कहा कि क्या वाकई खुदा ने तुम्हें मना किया है कि बाग के किसी भी दरख्त का फल नहीं खाना. तो वहां पर अम्मा हवा जब उसको रिप्लाई करती हैं कि नहीं, खुदा ने हमें सारे दरख्तों का कहा है कि तुम फल खा सकते हो, सिर्फ एक दरख्त जो कि दरमियान में है बाग के, उसका फल तुमने नहीं खाना है. तो शैतान रिप्लाई में कहता है कि नहीं, खुदा जानता है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम नेक व बद की पहचान करने वाले बन जाओगे, और तुम खुदा ताला की मानिद बन जाओगे, यानी कि तुम खुदा बन जाओगे. वही सेम प्रोपेगेंडा शैतान एक बार फिर से इंसानों के साथ कर रहा है. ये सब कुछ देखने के बाद भी लोग कहेंगे अल्मास पागल है, इसकी बात मत सुनो. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. I know that in recent years, we saw populist politicians undermining deliberately the trust that people have in important institutions like universities, like respectable media outlets. These populist politicians told people that, say, scientists are this small elite. These populist politicians told people that, say, scientists are this small elite. अब ऐसे लोगों की वजह से ही इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि अब ये खुलकर अपने प्लान्स बता रहे हैं, जो पहले कभी ये खुफिया मीटिंग्स किया करते थे, छुप के कहीं पर करते थे, अब ये बाहर निकलकर खुलकर कह रहे हैं कि नाउ ह्यूमंस आर हैकेबल एनिमल्स. इसका क्या मतलब है, ये कैसी टेक्नोलॉजी होगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कई वीडियोस के अंदर आपको बार बार इसके बारे में हिंट दे चुका हूं कि अब जो कुछ भी होगा वो हमारी स्किन के नीचे होगा, जो कुछ भी होगा
हमारी बॉडी के अंदर किया जाएगा और हमें 24 आवर्स हर लम्हा हर सेकंड इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जो कि 5G इंटरनेट है। उसके अंदर इंसान को भी इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग जिसको कहा जाता है, खैर इसको 6G भी कहा जा रहा है, 6G 2030 तक लगाने का इनका प्लान है, जिसके अंदर सब कुछ ही इंटरनेट के जरिए चलाया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि रॉकेट ना लेना, लेकिन लोगों को उस वक्त भी समझ नहीं आई और आगे भी कोई नहीं आनी। आप जो सुन रहे हो इसका सोल्यूशन अगर जानना चाहते हो तो इसका सोल्यूशन सिर्फ रेजिस्ट करने में है, दूसरे लोगों को जगाना है। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हमें और वक्त मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों को जगाने में कामयाब नहीं होते तो भी आपने मायूस नहीं होना है। कम से कम आपने खुद रेजिस्ट करना है, आपने रॉकेट्स नहीं लेने हैं। कम से कम आप खुद रेजिस्ट करें, फिर चाहे हमें जेल में डाला जाए या मार दिया जाए। याद रखना, इस जमीन पर हमारा सफर सिर्फ कुछ सालों का है, लेकिन इसके बाद हमेशा की जिंदगी या तो हेल में गुजरेगी या खुदा के साथ उसकी बादशाहत में। आपको फैसला करना है कि क्या आपको इस जमीन वाली जिंदगी ज्यादा अजीज है या खुदा के साथ हमेशा तक बादशाहत।